श्री अकाल जी, नमस्ते। मेरा नाम रवि विर्क है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। स्पेशल ये 2-3 तरीक़ों से है। एक तो ये कि इसका थोड़ा सा स्पिरिचुअल क्वेश्चन रहेगा, हम कुछ बात करेंगे आध्यात्मवाद की। और दूसरा जो मेन रीज़न है, आज हमारे पास स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। उनका नाम है स्वामी सद्योजाता। वो आर्ट ऑफ लिविंग के स्वामी हैं और पिछले बहुत सालों से अध्यात्मवाद से जुड़े हुए हैं। मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग बहुत सारी हस्तियों को जानते हैं और उनको जानना हमारे लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि वो हमारे सामने होती हैं और उनकी कला भी कुछ ऐसी होती है कि उनको प्रदर्शन करना पड़ता है। बहुत सारी हस्तियां हैं, चाहे हम उनको पंजाब में देखें, दिलजीत दोसांझ जी हैं, गुरदास मान जी हैं, या अगर नेशनल लेवल पे देखें तो नरेंद्र मोदी जी, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जैसे उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से बाहर आना होता है। हमारा उनके साथ आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। लेकिन जो अध्यात्मवाद के साथ जो स्पेशल हस्तियाँ जुड़ी होती हैं, वो कभी इतनी आसानी से बाहर आती नहीं हैं, और आएंगी तो हमारे हाथ नहीं पड़ती। तो आज हमारे साथ स्वामी सद्योजाता जी हैं, उनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे अध्यात्मवाद के बारे में। स्वामी जी, स्वागत है आपका स्टूडियोज़ में। नमस्ते। तो स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं इनसे कुछ अच्छे सवाल पूछूं। स्वामी जी अर्ली 90s से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, हम लोग बहुत सारी कला तो सीखते हैं ज़िंदगी में, पर जो ज़िंदगी जीने की कला है उसको कैसे सीखा जाए, उनके जो मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, टीचर्स हैं, उतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। लेकिन जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर्स हैं, श्री रवि शंकर जी, उन्होंने ये संस्था कुछ साल पहले 80s में शुरू की थी और तब से पूरी दुनिया में उन्होंने एक तहलका मचा रखा है। तो स्वामी जी उनके साथ जुड़े हुए हैं अर्ली 90s से, और मोर देन 50 कंट्रीज़ में इन्होंने ट्रैवल किया है, और इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये मोस्टली ओवरसी करते हैं। आजकल मॉन्ट्रियल हेडक्वार्टर है, जो कैनेडियन आश्रम है, वहाँ पे बेस्ड हैं। तो वैंकूवर में ये अभी आए हैं, तो वैंकूवर में इनका स्वागत करते हैं। बहुत गहरा स्वागत है स्वामी जी एक बार फिर। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप आर्ट ऑफ लिविंग जब जुड़े थे, आपने तब से आज तक जो आपका सफ़र रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा लाइट डालिए, फिर हम उसके बाद आपसे कुछ और पूछें। See, first of all, we should know what is art of living. जीवन जीने की कला क्या है? See, when you appreciate something, it becomes art for you. Like you are watching a dance program, and if you really appreciate it, then for you it becomes an art. You are looking at a painting, and if you like it, it becomes art for you. Similarly, when you begin to appreciate your own life, life becomes an art. But why we are not able to appreciate our life? Because of stress, because of tension. So when we learn some techniques which will help us to eliminate stress from our system, then we start to appreciate every moment of our life, and that is art of living. And as you mentioned, like early 90s, I was fortunate to meet Gurudev Shri Ravi Shankar ji, and I experienced the art of living programs, and since then I am fully with this. जी, तो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो कुछ जो भी हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा कॉन्टेक्स्ट वैसे भी रहेगा। गुरुदेव, जिनको हम बड़े प्यार से गुरुदेव बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। वो मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी, गुरु ऑफ जॉय। तो कहीं ना कहीं वो जो इंसान के अंदर का जॉय है, उसको बाहर निकालने की कला जो है, उसमें वो सक्षम है। तो आपका उनके साथ अच्छा सानिध्य रहा है, उसके बारे में बताएं कि वो लोगों के लिए तो एक हस्ती हैं, लेकिन आप उनको इतने अप क्लोज एंड पर्सनल जानते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। So Gurudev always gives this very simple example, beautiful example. He says, this is like the structure of an atom. Like inside it is proton and neutron, it's positive. And whatever is negative, the electron is in the surface. Similarly, like deep inside us, it is peace, joy, love, happiness. And what we call the problems or negativity and challenges are just on the surface only. So, through these techniques, the Gurudev has given this very beautiful technique called Sudarshan Kriya, which we learn in the Sky Breath and Meditation program, and Sahat Samadhi meditation, and different various techniques
Gurudev has given through the Art of Living programs, through which we come back to our center, to the source, which is joy, happiness, fun, love, peace. So when we are connected to that source, then we get that energy to move forward. And this is exactly what Gurudev has been doing in this world since 42 years. So in early 80s, when this Sudarshan Kriya and this art of living got expressed through Gurudev, he was in a village in Karnataka, a place called Shimoga, and immediately he shared this with people around him. And now in 42 years and 180 countries, millions of people are practicing, including Canada and in Vancouver. And these are very, very simple, natural techniques, how to handle the mind, how to get rid of stress. And Gurudev is, since you asked about Gurudev is not just preaching some knowledge, some dry philosophy. He is living the talk. So whatever knowledge, wisdom he is giving through the art of living, he is fully living that. And that is why you already mentioned, like, Guru of Joy, and Gurudev has written a book called God Loves Fun. Usually we think God means someone who is like very serious, sitting somewhere up there in the sky, but Gurudev says God loves fun, मैंने एक्चुअली उनके साथ रह के कुछ समय बिताया उनके आश्रम्स में, और बिल्कुल सही है, उनका जो एक मिशन है और उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है, हर इंसान के चेहरे पे एक मुस्कान लेके आना, तो वो दिखता है। गुरुदेव अक्सर कहते हैं, हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा स्वामी जी। आप कब इस संस्था से जुड़े, कैसे इस संस्था से जुड़े, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों जुड़े? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोसाइटी से या अपने परिवार से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, और ये संसार जो है आपको एक मटेरियल वर्ल्ड की तरफ पुश करती है। जो आपका परिवार है वो आपको किसी न किसी रिलीजन के साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आना, अध्यात्मवाद में आना कहीं ना कहीं एक पर्सनल डिसीजन होता है। आपने इतनी यंग एज में कैसे वो डिसीजन लिया, बिना किसी बाहरी दबाव से या प्रेशर या इन्फ्लुएंस से? So as I already mentioned, my journey started after meeting Gurudev Shri Ravi Shankar ji. This was in Kerala. I come from Kerala, and I was not at all inclined towards spirituality. As you know, Kerala is a very politically vibrant state where communism is very popular. Even right now, as we are speaking, Communist Party is ruling the state. So I was inclined towards communist movements and leftist ideology. So I was not at all inclined towards spirituality, and it was such a, I would say, divine coincidence that I was able to meet Gurudev, and all the concepts that I had about gurus, like, gurus sit on high platforms and they just preach you like you're all fools. This was the concept I had about gurus. So all that got vanished just by meeting Gurudev and just by listening to him. And usually there is this concept that when you have a lot of failures in life, when you have a lot of problems, challenges, to escape from all that, you go to spirituality or you go behind a guru. So in my case, actually the joy and that the happiness that I experienced when I started practicing this art of living programs, so this I had not experienced before. So something in me said, I want to share this with more and more people. Because sharing increases your joy. If you want to be happy, there is only one way: you have to share your happiness with others. So something inside me said, like, I want to become a full-time volunteer of Art of Living, and everything happened in the right way, and that's how my journey started. Wonderful. बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आपने कहा कि डीप कोर जो है हमारा वो पॉजिटिविटी से ही बना है। हम लोग, हमारा जो शरीर है या जो हमारा हमारा शरीर है वो कहीं ना कहीं किसी भी अध्यात्म से नहीं जुड़ा है, लेकिन हम लोग मन से कहीं ना कहीं धार्मिक हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने कुछ भी जो भी रास्ता बनाया है, जिसके रास्ते पे आप चले और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उस पर चले, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया है। Gurudev has actually given a very clear distinction between
religion and spirituality. One of his very, very famous quote is, religion is the banana skin and spirituality is the banana. But unfortunately what has happened in the world now is people have thrown the banana and fighting for the skin, like my skin is better than your skin. And if you see, all religions have three things, that is values, and then rituals or the practices, and symbols. Yeah. Values are the same in all religions. If you really go deep in any religion, they all talk about love, compassion, surrender, service, gratitude, prayer, wisdom. Only difference is in the symbols and the practices. And it is beautiful to have that diversity. But unfortunately what has happened is somehow the values have been kept behind and people started fighting for the symbols and practices. Yeah. So that is where it's very important to be spiritual. Yes, you can follow your religion, you can learn from the scriptures and all that, your holy books and all that, at the same time becoming spiritual. That is that's a need of the hour. जी, मुझे याद है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है 2010 में गुरुदेव यहाँ पे आए थे, तो हम उनको यहाँ पे एक मंदिर में लेके गए थे, उनका मान किया गया था। 2012 में जब वो आए तो वो एक गुरुद्वारा में गए थे, वहाँ पे उनका मान किया गया था। और 2016 में चर्च में उनका एक प्रोग्राम हुआ था। तो ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी सेकुलर पर्सन। तो कहीं ना कहीं वो एक सेकुलर इंसान भी हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग एज ए फाउंडेशन मैंने देखा है कि वो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही साइंटिफिक वे में आगे लेके जाती है. That is the reason why Art of Living is there in, like as I said, 180 countries. So that shows, you know, it cutting across nationalities and religions and no barriers. No? Usually we say anyone who can breathe can do Art of Living. You know, so that is why it is becoming very, very popular all over the world. Yes, और मुझे याद है कि गुरुदेव शायद पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लीडर थे जो पाकिस्तान भी जाके आए हैं, इराक में भी, मिडल ईस्ट में भी काफ़ी काम है. तो उनकी जो बैकग्राउंड रही है वो एज ए साइंस स्कॉलर भी रही है. तो अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे जानने की कोशिश करें कि तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो क्या साइंस ने स्पिरिचुअलिटी को जन्म दिया या स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा एक साइंस है? No, science is what is this and spirituality is who am I. So there is actually no conflict between, especially when you see the, like, you know, the ancient Indian the philosophy, there has never been any conflict between science and spirituality. जी, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ऑफ जो स्पिरिचुअलिटी है वो साइंस के साथ कहीं जुड़ी हुई है. Now, मैंने देखा है जो गुरुदेव हैं या आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के जितने वॉलंटियर्स हैं, जो भी कम्युनिटी है, वो लाइफ को सेलिब्रेट बहुत करते हैं. उनके चेहरे पे एक मंद मुस्कान जो है बहुत हमेशा रहती है, और वो कहीं अपने आप को कहीं छुपाते नहीं हैं सेलिब्रेशन में. और उसका जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वो हमने देखा था जब आर्ट ऑफ लिविंग ने 25th ईयर की जो सिल्वर जुबली थी बैंगलोर में जो सेलिब्रेट की थी. उसके बाद फिर जर्मनी में भी एक कल्चरल फेस्टिवल हुआ था, और आने वाले टाइम में मैंने सुना है कि यूएस में भी, अमेरिका में भी एक कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है. तो कुछ उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? Since you mentioned about smile, you know, this is the fact that to keep a smile on our face, only 4 facial muscles have to work. If you just make 4 muscles in your face work, you can have a smile. But to keep a long, serious, angry face, 72 muscles have to work. So it is really not intelligent to make 72 muscles do hard work and have a long, serious, angry face. Now, and you mentioned about life celebration, because our life is very short. Billions of years have already passed before we came to this planet, and billions of years are yet to follow after we leave this planet. And what is our life? 80 years, 90 years, 100 years, still it is nothing. It's not even a drop in the ocean. So during this short time, it is really not, this is what Gurudev says, it's really not worth spending this life, you know, angry over the past, regretting the past, or anxious about the future, afraid about the future, worried about future. Life is too short. So then you may say, but you know, I am having some problems in my life, I am having some challenges in my life, how can I be happy? This is where our own breath comes to our help, because breath has lots of secrets.
But neither at home nor at school we have never been taught how to breathe. We learn everything else. We learn science and literature and history and all that, but we never learn how to breathe. We just take it for granted. And this is where what we call the Sky Breath and Meditation program in this part of the world. In India it's called the Happiness program, the beginners program in Art of Living, where we learn very simple, very natural breathing techniques, how to handle the mind, how to get rid of stress and strains. So at any given point of time, our mind is either in the past or in the future, like what happened yesterday, what happened few hours ago, what will happen tomorrow, how my life will be after 5 years. So medical science is saying, like, because now medical science has acknowledged that body and mind are not two different things. They started calling the body-mind complex. They are connected. So at whatever, just by the oscillation happening in the mind, toxins are formed in our nervous system. So this is why it's very, very important that we should learn some breathing techniques, some pranayama and Sudarshan Kriya. Sudarshan Kriya is a gift given to this world by Gurudev Shri Ravi Shankar ji, and this you can learn only in the Art of Living Sky Breath and Meditation program. So it's very important that this should be part of our daily practice. And coming to this question of the topic of World Culture Festival, see, one beautiful philosophy that India has given to this world is Vasudhaiva Kutumbakam, which means one world family. In fact, this year's International Yoga Day, that was also the theme, one world family. And Art of Living has been practicing that since beginning. So in 2006, we had our first World Culture Festival, that was in Bangalore. That is where the International Ashram of Art of Living, International Center, is in Bangalore. So we had our first World Culture Festival in 2006 in Bangalore, and then 2011 it was in Germany at the Olympic Stadium in Berlin, and 2016 we had in Delhi, and 2023, that is this year, September 29th to October 1st in Washington DC at the National Mall. Tens of thousands of people from 180 countries are going to assemble there, and musicians, singers, artists, world leaders, they will all assemble in one platform, of course in the presence of Gurudev Shri Ravi Shankar ji, because this is the need of the hour, like, to consider the world as one family, one world family, Vasudhaiva Kutumbakam. So that is the theme of this World Culture Festival. So I would also take this opportunity to invite everyone in Vancouver and Canada and all of you who are watching this to please be part of this celebration. Thank you so much for the invitation, Swami ji. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ टाइम स्पेंड किया. कोई लास्ट मैसेज, कोई एक मैसेज जो हमारे दर्शकों के लिए, ज़्यादातर दर्शक हमारे यूथ हैं, उनके लिए कोई एक जो स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए रास्ता आसान कैसे किया जाए? I would again, there is a very famous quote of Gurudev. He says, when you follow fun, misery follows you. But when you follow knowledge, fun follows you. Well, thank you so much, Swami ji, for coming to our studios. और इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है. हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आर्ट ऑफ लिविंग के जो भी प्रोग्राम हैं, अगर उनको आप अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.artofliving.org, और हमारा जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कनाडा का है वो मॉन्ट्रियल आश्रम मॉन्ट्रियल में है. और हमने अभी हमें पता लगा कि श्री रवि शंकर जी अक्टूबर में वहाँ पे, अक्टूबर 3 से 9 तक वहाँ पे आएंगे. तो अगर आपका मन हो तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कीजिए. हमारा लोकल कांटेक्ट जो है वो है, आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 6047791928. हमारी यहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स रहती हैं. वैंकूवर में बहुत चैप्टर्स हैं, सरी में, रिचमंड में, वैंकूवर में. तो अगर हमारे साथ आपका जुड़ने का मन करे तो प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल. थैंक यू सो मच.